بسم الله الرحمن الرحيم. रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamualaikum students. Welcome to the Educators Online class. I am Fasiha, your science teacher. Students, open your books. Chapter 8, Heat, page number 80. Students, firstly I will read it and you have to listen it very carefully. Then I will explain it later. Textbook page number 80. Heat energy. Anything which is able to do work has energy. Heat is a kind of energy. The heat energy which keeps our bodies warm comes from food. All things contain heat. Some have more heat than others. Heat energy is the result of movement of tiny particles of solid, liquid, or gas. For example, cold water has less heat than boiling water. Students, all things, whether they are living or non-living, they contain heat. कुछ ज़्यादा हीट कंटेन करते हैं और कुछ कम. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि whenever you are hungry, your body temperature starts decreasing, and when you eat food, body becomes warm because food provides heat to our body. Similarly, students, जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को देखें तो दे आर इन 3 states: solid, liquid और gas, and they contain tiny particles. Students, these particles are always moving and their movements produce the heat energy. For example, cold water के particles slowly move करते हैं as compared to boiling water because boiling water contains more heat energy. Textbook page number 80. Heat and particles. Particles are always moving because they have energy. When the particles move faster, they make things hot. We can feel the energy of the particles as heat. Students, now we talk about how particles are moving. Because they contain some sort of energy. जब पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं तो कोई भी सरफेस या थिंग जो पार्टिकल्स कंटेन करती है वो हॉट हो जाती है और पार्टिकल्स की इस एनर्जी को हम एज अ हीट फील कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 80. एक्टिविटी. हॉट पार्टिकल्स मूव फास्टर देन कोल्ड पार्टिकल्स. Fill one bowl with cold water. Fill another bowl with hot water. Put both bowls on a table. Use a dropper to put a few drops of red ink in each bowl. Do not shake the table or the water. What do you see? Students, if we take two bowls, एक को हम कोल्ड वाटर से फिल कर दें और दूसरे को हॉट वाटर से. हॉट वाटर को हीट कैंडल प्रोवाइड कर रही है. नाउ यूज अ ड्रॉपर टू पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ईच बॉल. हमने वाटर या टेबल को शेक नहीं करना. नाउ व्हाट डू यू सी? स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक dissolve faster in hot water than it does in cold water because hot water has more energy than cold water. When water is heated by the candle, the molecules of water moves and dissolve red ink faster. Now let's do the recall question number 1 of your textbook page number 87. The question is, what are the sources of heat? Answer. Sources of heat are the sun, burning wood, paper, and other fuels such as oil or gas. Students, as we read that heat sources two types के होते हैं, natural
और मैन मेड, और ये सोर्सेज हमें हीट प्रोवाइड करते हैं। सन, बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल ऑयल और गैस, हीट के सोर्सेज हैं। Recall question number 2. The question is, how is heat useful? Answer. Heat does useful work for us. It keeps our bodies warm. We use it to cook food and to iron clothes. It can also make things move. A steam engine moves due to heat. Students, हीट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखती है। इसी तरह हम कुकिंग में भी हीट यूज़ करते हैं। ये थिंग्स को मूव करने में भी हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल, ट्रेन का स्टीम इंजन हीट की वजह से मूव करता है। Students, today we read about the heat energy. Now your homework is to do reading of page number 80. Write recall question number 1 and 2 on your notebook and also learn it. In the last, beta, stay home, stay safe, keep your surroundings neat and clean. Thank you for listening.